हाय देखा आमर सेकेंड पार्ट आम करुचे चैप्टर 1 साइंस कार कहला सीबीएसई चैप्टर 1 साइंस ओके आम पार्ट 1 रे क्लीयर कर देचे सब कि गैसीय स्टेट करचे सॉलिड स्टेट करचे लिक्विड स्टेट करचे तार कैरेक्टरिस्टिक करचे सब कर देचे ऑलरेडी ओके एंड आम सेकेंड पार्ट आज हम करुचे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम स्टार्ट करवा एंड तुमको चैनल जदि लगे टिके टिके लगे भल लगे तुम्हें सब्सक्राइब टिके करदेव ना कि ओके जब भल न लगे ना कि मतलब तुम करने की दरकार नहीं ओके इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए आम टेम्परेचर बढ़ेले कौन होचे कौन न होचे सेटा टिके देखिए टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस okay in a beaker and suspend a laboratory thermometer of that it evolve with contact with the ice तो से कहूँ जे आमर आगे नहीं कहूँ देची थर्मोमीटर देची सहित आइस नहीं बिकर रे ग्लास ट्रायर नहीं थर्मोमीटर नहीं सहित आयरन स्टैंड नहीं एंड बर्नर नहीं आइस नहीं सब नहीं देखा जाऊँगी जमी एज यूजुअल कर देखा भी जाऊँगी आयरन स्टैंड नहीं सब नहीं एंड से आइसटा ये कौन हो गला बाबा पानी हो गला हिट देला पर कौन हो गला पानी हो गला कैन मैटर चेंज स्टेट कहूँ जे मैटर वी ऑल नोन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट वाटर 3टा स्टेट रही पार सॉलिड एज आइस लिक्विड एज फेमिलियर वाटर and gas at water vapor ठीक है what happen inside the matter during this change of state अर्थात change of state फल matter inside कौन होची पचाचु what happen to the particle of matter during a change of state how does this change of state takes place we need answer to this question is it ठीक है चलो देखिया कौन कहूची कौन न कहूची start heating the beaker on a low flame अल्प फ्लेम रे बिकटा हिट कर नो द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग टेम्परेचर आइस जिते मेल्ट स्टार्ट कला से टेम्परेचर तुम मापिक रख नो द टेम्परेचर व्हेन ऑल आइस हाज कन्वर्टेड इन वाटर तापर जिते टोटाल सब जे आइस कन्वर्ट हो गला वाटर को तापर टेम्परेचरटा ये कर रेकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट नाउ पुट ए ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टायरिंग टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग जो पर्यंत वाटर बॉइल स्टार्ट न होइछि सेपटा घंट कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग till most of the water has vaporized record observation for the तो कौन कह शुणे ऑब्जर्वेशन टोटल कौन कहला ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड टेम्परेचर बढ़ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी बढ़ ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड पार्टिकलटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ला तो पार्टिकल जो पार्टिकल थी से वाइब्रेट कर बहुत स्पीड रे द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एनर्जीटा सप्लाइड जो करुच्ची अट्रैक्शनटा अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा जदि आम हिट करचे तो पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली अर्थात फिक्स्ड पोजीशन रे रही लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन जो थिला सेटा रहइबनी ता सहित से पार्टिकलटा कौन करियो मूव फ्रीली करियो ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड द मिनिमम टेम्परेचर एट रहला डेफिनेशन द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट बाबा डेफिनेशन रहला मेल्टिंग पॉइंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एटा इंडिकेशन कौन दिए स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल भितर केते स्ट्रेंथ अच्छी ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आइस मेल्टिंग पॉइंट केते कहूची 273.15 केल्विन के फॉर केल्विन द प्रोसेस of melting that is change of solid in state into liquid is known as fusion मन रख फ्यूजन क्या कहला सॉलिड को लिक्विड करिवो the change of solid into liquid state is known as fusion when a solid melts its temperature remain the same so where does heat energy go जेतेले सॉलिडटा मेल्ट हबो टेम्परेचरटा समान रहबो तापर कहूचे से जो heat energy कुआड़ गला you must have observed during the experiment of melting experiment रे that the temperature of the system does not change after the melting is reached जो पन melting है ही नहीं कौन कहूची that the temperature of the system does not change after the melting is reached जो पन melting आसीनी बा melting point आसीनी melting से पन द temperature change हबन till all the ice melt जो पन सब जगह ice melt है ही नहीं this happen even though we continue to heat the beaker heat kala pore this is we continue to supply heat the heat get up in the change in the state by the overcome the force of attraction between particle the force of attraction को कौन करियो as this heat is energy is absorbed by ice without showing any rise in the temperature it consider
that it get hidden in the content of beaker and is known as latent heat. ए टोटाल कहानी कहले से कहूँ आमे beaker नहींचे beaker आइस नहींचे आइस रे आमे हिट देले देला पर आइसटा मेल्ट होकर वाटर हो गला से जो हिटा से कह हिटा गला कुआड़े बेले कहूँ सेटा लाटेंट हिट भाव में रहा बेले कहूँ लाटेंट हिट कथा कहूँ ओके तो व्हाट लाटेंट मीन्स हिडन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmosphere pressure and its melting point known as latent heat of fusion मन रखे बाबा एटा मन रखे latent heat of fusion latent heat of fusion कौन कहूँ latent heat of fusion कौन कहूँ गोटे केजी सॉलिड टाको तमे लिक्विड कन्वर्ट करिवो एटमॉस्फेयर प्रेशर रे एंड मेल्टिंग पॉइंट रे सो पार्टिकल in water at 0 Celsius 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. When you supply heat energy to water particle जेतला हमें water particle की heat energy दबा start moving even faster at a certain temperature a point is reached good point आसीबो when the particle have enough energy to break free from the force of attraction each other गोटे point आसीबो गोटे टाइम आसीबो से टाइमिंग रे पार्टिकल टा बहुत एनर्जी मिलिबो ताकू से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तला से एनर्जी रहइबोनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहइबोनी एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस से लिक्विड टू गैस हो द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेयर प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट कौन कहला बॉइलिंग पॉइंट कहला कौन कहला रे बॉइलिंग पॉइंट कहला मेल्टिंग पॉइंट जाइतला सेपटे पटे बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग इज ए वर्क फेनोमेना particle from the bulk of the liquid gain enough energy to change in the vapors for water this temperature is 373 Kelvin जटी कि 370 Kelvin माने 100 Celsius ओके कैन यू डिफाइन द latent heat of vaporization latent heat of vaporization कौन से पचाउची do it at the same way as have defined the latent heat of fusion particle in the steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because particles in the steam have absorbed extra energy in the form of a latent heat of fusion. चलो से कहूँ सॉलिड लिक्विड है हिट देला लिक्विड गैस हम हिट देला लिक्विड सॉलिड हम कूल कला गैस रू लिक्विड हम कूल कला सो यू इनफियर that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. I've learned that substance around us change from solid to liquid and from liquid to gas application of heat, but there are some changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. से कहूँ solid to डायरेक्ट गैस हम गैस टू डायरेक्ट solid हम लिक्विड फॉर्म आसबनी Take some camphor, cross it and put into a china dish. कथा कहूँ put a invested funnel after the china dish, put a cotton plug on the steam of the funnel. Okay, से देइछि सब याको करिया को एक्सपेरिमेंट करिया को देख एक्सपेरिमेंट रे ये हला चीना डिश जो तले अच्छी एंड ये हला कॉटन प्लग जो ये हला कैम्फर वेपर कैम्फर सॉलिड ता भीतर नहीं जो से कहूँ इन्वर्टेड फनेल नहीं बर्नर नहीं तले ठीक है नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व कौन कर व्हाट डू यू इनफियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी से कहूँ कौन देखिला ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन बाबा इंपोर्टेंट रहइबो एटा सब्लिमेशन कौन जे सॉलिड टू गैस डायरेक्ट हैला एंड डायरेक्ट चेंज गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन ठीक है ओके इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कथा पढ़िया We have already learned that the difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particle अर्थात down distance अच्छी what will happen when the we start the pressure and pressure देला पर compress gas को compress कला पर कौन हबो बोले से कहूची applying enclosed in a cylinder भितर will the particle comes closer particle पाखापाखि पळै आसबे कि ए जो थिला देखो एठी कौन थिला देखो एठी एट पाखा दूर थिला एट पाखापाखि आला फुल कंप्रेस कला पर पाखापाखि पळैला विल पार्टिकल कम क्लोज डू यू थिंक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर चेंज द स्टेट ऑफ मैटर तब इंक्रीज कले बा डिक्रीज कले प्रेशर जो माने जो मैटर स्टेट टा चेंज हे परियो कि से कहया कथा ठीक है अप्लाइंग प्रेशर and reducing temperature liquefied gases have heat solid carbon dioxide CO2 it is stored under the high pressure solid CO2 get converted directly into gaseous state on decreasing the pressure of atmosphere without coming into liquid state and this is the reason that solid carbon dioxide known as dry ice भाई एटा मोस्ट solid carbon dioxide के solid CO2 को dry ice कहीं कहते एटा आंसर दर दे ठीक है एटार आंसर दे
Thus, we can say that pressure, temperature determine the state of substance, whether it will be solid or liquid or gas. So, कहूँ ये तुम solid to liquid fusion, liquid to solid solidification, liquid to gas vaporization, gas to liquid condensation, solid to gas sublimation, gas to solid deposition. ठीक है, इंटर कन्वर्जन दे देछि टोटल लिखि दबा. ओके, इभापोरेशन जीव. देखो इभापोरेशन कौन कौच बाबा देख कहला वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. कैन यू क्वेट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जो जब वाटरटा को आम अनकभर माने कभर कर स्लोली चेंज इनटू भेपर. वाटरटा कौन हम भेपर हो मनकर छात बन छात उपर तुम नहीं रूफ्रे बाल्टीटे पानी थोद खरा दिने घोड़े न घोड़े ठीक अच्छे देख तुम्हें जब खरा छाड़ी जब 4टा कि 5टा हो तुम देख से बाल्टी पानी नथ व्हाट हैपेंड टू वाटर एंड अबव टू एग्जांपल वाटर कुआड़े गला बोले से कौन कुआड़े जीव. We know that particle of matter are always moving and never rest अर्थात रेस्ट अब नहीं कौच. At a given temperature in any gases, liquid or solid, there are particle with a different amount of kinetic energy. Or kinetic energy different. In the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle to get converted into vapor. This phenomenon of change of a liquid into vapor, liquid to vapor at any temperature at boiling point is called evaporation. भाई देख liquid to vapor हो at any temperature है कौन दे boiling point ए जो evaporation बस कहानी है कि factor affecting evaporation. Let us consider this with an activity. Take 5 ml of water in the test tube and keep it near a window. Window पाखे रख नहीं कि under a fan तले. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near window and under a fan or under a fan. कथा दुईटा कथा 5 ml of water in the open china dish रख नहीं कि and keep it inside a cupboard or on a shelf of your class. Record the room temperature मैंने 25 degree Celsius 24 degree Celsius जहाँ भी तो रूम रेकर्ड कर. Record the time or days for the evaporation process in the above classes. Repeat the above 3 step activity on a rainy day and record your observation. What do I infer about the effect of temperature, surface area and window velocity of the evaporation. So कौन देखो you must have observed that the rate of evaporation increases by factor affecting कथा हम कहूँ. and increasing surface area बढ़ला evaporation जल्दी हम. and increase of temperature बढ़ले surface area बढ़िबो ए जो evaporation बढ़िबो. and decrease in humidity. तीनटा कथा डिस्कशन करिबो. देखो we know that evaporation is a surface phenomena. भाई एटा most important evaporation गोटे surface phenomena. ठीक है, if the surface area is increased the rate of evaporation increases करिबो. For example, for putting clothes for drying up we spread them out and okay चलो. an increase of temperature, with the increase in of temperature more number of particles get enough kinetic energy to get the vapor state. okay तापर कहूची a decrease in humidity decrease कले कौन हबो बाबा. humidity decrease करे कथा कहू से humidity decrease करे कथा humidity is the amount of water vapor present in air. ठीक है, the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. An increase in wind speed, अर्थात कौन wind speed जो बढ़िला, it is a common observation that the cloth dry faster on windy day with the increase in wind speed. The particle of the water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding. okay देखो तापर दिया हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग. इवापोरेशन जो कूलिंग कौन कथा इन ओपन भेसल गोटे ओपन भेसल नि ओपन अच्छे. ओके द लिक्विड कीप ऑन इवापोरेटिंग. लिक्विडटा इवापोरेट हवा स्टार्ट कर दो. ठीक अच्छे, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन. ओके से जो वाटर रहिला द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एमाने एनर्जी पाइबे कंपेयर टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन. दिस absorption of energy from the surrounding make it surrounding cold surrounding cold लगे. जो what happen when your pour some acetone
जोटा कि नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन ओके एसीटोन कथा कहूँ नेल पॉलिश रिमूवर कथा कहूँ कीटोन फर्म कीटोन कथा आम जो 10th डिस्कसन करूँ कीटोन यहाँ कह आम ठीक अच्छे कहला ऑन योर पाम ऑफ द पाम रे जो एसीटोन हम से कौन बोली कहूँ द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कजिंग द पाम टू कूल फील तो पामटा कौन लगे ठंडा लगे से कहूँ आफ्टर हॉट सनी डे गरम दिन पूरा पीपल जो आम खरा दिन पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ओपन ग्राउंड बिकॉज द large latent heat of evaporation water help to cool the surface area. Can you cite some more example from daily life where you can feel the effect of cooling due to the evaporation? Why should we wear cotton clothes in summer? So कहूँ cotton clothes कहीं हम summer रे पिंधे during summer we prepare more because of the mechanism of our body which keep cool. Okay, we know that during evaporation the particle at the surface of liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. से कहूँ आउ थोड़ा मुझे भलसे कहूँ शुण से कौन कहूँ we know that आम जाने ओके ड्यूरिंग इवापोरेशन टाइमिंग द पार्टिकल ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड सरफेस रु गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एनर्जी मिल ताको और बॉडी सरफेस एंड चेंज इन वेपर पार्टिकल लिक्विड वेपर बन द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट वेपोरेशन इज अब्जर्व फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल तो बॉडीटा से कूल लगे कॉटन बीइंग ए गुड अब्जर्वर ऑफ वाटर हेल्प इन अब्जर्विंग द स्वेट्स एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर बाय इजी इवापोरेशन कथा कहूँ ओके व्हाई डू we see water droplet on the outer surface of the glass containing ice cold water कहूँ आम ice cold water नहींचे बाहर जो देखे ना फ्रिज थोला आम जो कम फ्रिज थोला बोतलटा से बाहर वाटर ड्रॉपलेट लगे तो कहूँ व्हाई डू सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास containing ice cold water जोटा फ्रिज थोड़ा तो let us took some ice cold water in a tumbler some soon we will see water droplet on the outer surface of the tumbler so the water vapor present in air जो water vapor अच्छे on coming in contact with the cold glass water तो glass water जो नेले ये जो contact आस जो बाहर contact on coming in contact with the cold glass water lose energy and get converted into liquid state place so which can use droplet ताको आम droplet हिसाब रे देखबेले कहूँ and ए विषय हो गला हमर शेष हो गला and जदि चैनल सब्सक्राइब तुम कर दियो तो मेरी आम भल भल वीडियो आनिबा तुम ओके ओके